Okay, so today's session is about matching heading and matching information questions. I will tell you how you can approach matching heading and matching information questions. Apart from this, we will look at two strategies for matching heading and some of the reading skills and tips for the matching information. Later on, we will do some exercises also for these two type of questions. So let's start. What are matching heading questions? This type of question, they require you to match heading in the question to the correct paragraph or the reading section in a text. Now, what you have to do, आपको क्या करना है? मैच करना है हेडिंग्स को जो आपकी क्वेश्चन में गिवन है उसको करेक्ट पैराग्राफ से कि ये कौन से पैराग्राफ से मैच करती है या कौन से रीडिंग सेक्शन से मैच करती है. सो देयर विल ऑलवेज बी मोर हेडिंग्स. आपको हमेशा हेडिंग्स ज्यादा मिलेंगी एज कंपेयर टू द पैराग्राफ्स. Suppose you have only 5 paragraphs or 6 paragraphs, but the number of headings will be more. Headings होंगी आपकी 7 or 8, and some headings will not be used. कुछ headings आपकी use भी नहीं होंगी. It is also possible कि some of the text may not be included in the task. कुछ text से related होगा नहीं, कुछ task से related उसमें नहीं होगा, right? So this task type is used with text that contain paragraphs that have clear defined themes. यहाँ पे आपको क्या करना है जब आप matching heading करते हो, you have to focus on the central idea, the central theme of the paragraph. It tests your ability कि आप recognize कर पा रहे हो main idea को आपके paragraph में, आप identify कर पा रहे हो supporting ideas को या नहीं, right? Now this type of question they are tricky also because इसमें आपको more than टाइम लगता है, मोर देन द यूजुअल टाइम लगता है. जितना टाइम आप बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में लगाते हो इसको कंप्लीट करने में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है. सेकंड, व्हाई दिस इज ट्रिकी? बिकॉज यहाँ पे हेडिंग्स ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू द पैराग्राफ्स. सम पैराग्राफ्स डोंट नीड हेडिंग. कुछ पैराग्राफ्स को कोई हेडिंग नहीं चाहिए होती, सो यू कैन लीव दैट. देयर आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन हेडिंग. हेडिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है. हेडिंग्स that only include specific detail rather than main idea may mislead you. अब कुछ हेडिंग्स जिसमें स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं, मेन आइडिया नहीं गिवन, सो उससे आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो. सम हेडिंग्स उसमें सम वर्ड्स होते हैं दैट आर इन द पैराग्राफ बट वो मैच नहीं करते, राइट? सो इसलिए ये क्या होते हैं, ट्रिकी होते हैं, राइट? नाउ लुक एट सम ऑफ द अप्रोच. हम क्या देखेंगे, वी विल लुक एट द अप्रोच कि आप कौन सी अप्रोच अप्लाई करने वाले हो. सो उसके लिए आई एम गोना गिव यू 2 स्ट्रैटेजीज जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो मैचिंग हेडिंग क्वेश्चन. फर्स्ट इज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है. सेकेंड इज you have to read the text first. Now, how will you do the first one? First strategy is that you have to read the question first. सबसे पहले आपको question read करना है. Very first step is first read each heading. You have to read the each heading. आप सारी headings को read करोगे. Try to completely understand. आपको you have to understand the meaning of each heading. By reading all of them thoroughly. जब आप सारी headings को read कर लोगे, you will understand the main idea of heading, है ना? जब हम सारी headings को एक बार read कर लेते हैं, हमें एक idea हो जाता है कि इस heading का main idea क्या है, right? और हम उसे easily read करके understand कर पाते हैं और paraphrase भी कर सकते हैं जब हमने अपनी headings को read करा. नेक्स्ट इज सर्कल करो कीवर्ड्स विद इन द हेडिंग्स. अब आपको जो भी लगता है कि इस हेडिंग में मेरे ये कीवर्ड्स हैं एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट, आप उसको क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे और सर्कल करोगे. दोज कीवर्ड्स दे कैन बी द नेम, प्लेस, डेट्स, नाउन्स. ठीक है, जब आपने उनको रीड कर लिया यू हैव टू अंडरलाइन देम. आप अंडरलाइन करो या सर्कल करो सो दैट यू विल कीप इन माइंड कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं. कनेक्ट करो करेक्ट हेडिंग को टू द एप्रोप्रिएट पैराग्राफ सो दैट आपके लिए इजी हो जाए फाइंड आउट कर. अब नेक्स्ट इज कोई सिमिलैरिटी कोई डिसिमिलैरिटी है बिटवीन द हेडिंग्स, उसको नोट डाउन करो कि क्या सिमिलैरिटी है इन दो हेडिंग्स के बीच में. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हेडिंग्स आर ऑफन वेरी सिमिलर और कंप्लीटली क्या होती है, ऑपोजिट होती है.
सो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस विल बिकम क्लियर अमंग द हेडिंग्स। आप चेक करो कि कौन सी दोनों जो है वो सिमिलर है और कौन सी दोनों डिफरेंट। नाउ वंस यू पिक्ड आउट योर कीवर्ड्स, आपने दोनों हेडिंग्स की सिमिलैरिटीज चेक करी, आपने या फिर उनके बीच में कोई डिफरेंस है वो चेक करा, तो आप क्या करोगे, कीवर्ड्स को पिक्ड आउट करो कि इन दोनों के बीच में सिमिलर क्या था या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। इससे आपको ऑप्शन क्लियर हो जाएगा कि ये वाली हेडिंग दूसरी हेडिंग से कैसे डिफरेंट है, राइट। नेक्स्ट इज रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। अब आपको फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस जरूर रीड करना है, बिकॉज इसमें आपका क्या होता है, इट कंटेन्स द मेन आइडिया। इट इज गुड कि आप प्रैक्टिस करो, रीड करो इन सेंटेंसेस को केयरफुली, बिकॉज ये टाइम सेव करते हैं, राइट। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप स्किम करो अदर सेंटेंसेस को क्विकली within the paragraph, because main idea might not be apparent until the second or third sentence, right? So आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को तो रीड करना है। इट इज गुड कि आप ऐसा करते हो, तो आपका टाइम सेव होता है, बट आप अदर सेंटेंसेस को भी स्किम करोगे। माइंड दिस थिंग, ऐसा नहीं करना कि सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को पढ़ना है और मिडल में कुछ नहीं रीड करना। उनको भी करना है आपको रीड, उनको स्किम करना है आपको। स्किम मतलब क्विकली रीड करना, बिकॉज समटाइम्स आपका आइडिया अगर फर्स्ट में नहीं है तो मे बी वो सेकंड और थर्ड में हो, राइट। सो मेक दिस थिंग क्लियर। स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम फर्स्ट और लास्ट बोला था पढ़ने को, बट मिड में मिला मुझे तो आंसर। सो यस, इट इज फर्स्ट और लास्ट आपको एक तरीके से पैसेज का, पैराग्राफ का इंट्रो एंड कंक्लूजन बताता है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, लेकिन मेन आइडिया समटाइम्स सेकंड या थर्ड में भी होता है। ओके okay? Now, heading that is the most suitable for the paragraph should be chosen. Now, the heading that is most suitable for the paragraph should be chosen. अब आपने जब डिफरेंस देखा दोनों हेडिंग्स के बीच में, सिमिलैरिटीज भी चेक कर ली, आपने हेडिंग को कीवर्ड के थ्रू भी रीड आउट कर लिया और अपने टेक्स्ट को भी रीड कर लिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आप चेक करोगे कि कौन सी मोस्ट सूटेबल हेडिंग थी इस पैराग्राफ के लिए, राइट। तो चूज करो उस हेडिंग को जो मोस्ट क्लोजली मैच करती है आपके पैराग्राफ से। जब आपने रीड करा अपने पैराग्राफ को, मेक अ नोट इफ यू आर अनश्योर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल हेडिंग्स। अगर आप नहीं डिफरेंस बता पा रहे, आप अनश्योर हो, जस्ट लीव ऑन, मूव ऑन करो नेक्स्ट पे, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम। You may be able to cross some heading options out, but answer may become clear once you have read all the paragraphs. जब आप सारे पैराग्राफ्स को रीड कर लेते हो, तब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है फाइंड आउट करना। रिमेंबर कि हेडिंग होता क्या है, हेडिंग इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। नाउ एज यू नो कि हेडिंग क्या है, इट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, नॉट अ स्पेसिफिक डिटेल। हम हेडिंग्स में कभी भी कोई स्पेसिफिक डिटेल को फाइंड नहीं करते, हम उस पैराग्राफ के जिस्ट, उसकी समरी, दैट मीन्स उसके मेन आइडिया को फाइंड आउट करते हैं कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। ये अगर इसका मेन आइडिया है तो हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में चेक करते हैं कि दिस इज द मेन आइडिया, राइट। हम कोई स्पेसिफिक डिटेल या पर्टिकुलर एक डिटेल को नहीं फाइंड आउट करते पैराग्राफ में, राइट। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। नाउ लेट्स लुक एट स्ट्रैटेजी नंबर 2, रीड द टेक्स्ट फर्स्ट। नाउ सम स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, दे प्रेफर टू स्किम थ्रू द टेक्स्ट, रीडिंग ईच पैराग्राफ क्विकली सो दैट दे कैन गेट द जनरल जिस्ट ऑफ व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। अब सम स्टूडेंट्स दे डू वाइस वर्सा, ठीक है, वो हेडिंग्स को पहले रीड नहीं करते,
वो क्या करते हैं, पैसेज को पहले रीड करते हैं, टेक्स्ट को पहले रीड करते हैं। नाउ दीज आर टू स्ट्रैटेजीज जो अभी मैंने बताई, दैट वाज द फर्स्ट वन जिसमें हम क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं, दैट मींस हेडिंग्स को पहले रीड करते हैं, फिर हम अपने टेक्स्ट को रीड करते हैं। बट इन दिस सेकेंड स्ट्रैटेजी, इसमें आप टेक्स्ट को पहले रीड करोगे। टेक्स्ट को पहले रीड करना मतलब पैराग्राफ्स को रीड करना क्विकली, राइट? आपने अपने पैराग्राफ को पहले रीड करा, पैराग्राफ को रीड करने के बाद यू हैव टू चेक कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। नाउ बी वेरी केयरफुल विद द टाइमिंग। आप टाइमिंग, तो इट्स एन एग्जाम विद 55 मिनट्स एज आई सेड, ये सिर्फ 55 मिनट्स का एग्जाम है आपके लिए, सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। रीडिंग के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ स्पीड, राइट? सो रिमेंबर कि आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स है पर सेक्शन के लिए, राइट? सो यू कांट स्पेंड, आप पूरे 20 मिनट सिर्फ मैचिंग हेडिंग पे डिवोट नहीं कर सकते, राइट? सो यू हैव टू बी क्विक इन रीडिंग द टेक्स्ट। आप बहुत जल्दी से टेक्स्ट को रीड करोगे। रीड वन पैराग्राफ एट अ टाइम। सबसे पहले आप एक ही पैराग्राफ को रीड करो। नाउ अगेन some more time on first and last sentence of the paragraph, ताकि आप आइडेंटिफाई क्या कर पाओ, मेन आइडिया को आइडेंटिफाई कर पाओ। जब आपने पैराग्राफ को रीड करा, आपको मेन आइडिया पता लगा कि इस पैराग्राफ में मुझे क्या कन्वे हो रहा है, तो क्रिएट करो अपनी ओन हेडिंग। ट्राई टू डू दिस कि इसको मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, किसके बारे में मुझे बताया जा रहा है इसमें। सो एज सून हैव यू स्किम थ्रू द पैराग्राफ, जैसे ही आपके पैराग्राफ्स को स्किम करा एंड यू थिंक ऑफ योर ओन हेडिंग, या आपने कोई शॉर्ट सेंटेंस सोचा कि ये हो सकता है इसका हेडिंग, समराइज करो व्हाट यू हैव रेड। देन योर हेडिंग शुड encompass the main idea, not just specific detail. That means आप सिर्फ स्पेसिफिक डिटेल की वजह से उसे कंक्लूड नहीं करोगे, उस मेन आइडिया की वजह से कि इस पैराग्राफ में ये कन्वे हुआ है, राइट? देन आपने एक हेडिंग क्रिएट करी। नाउ रीड ईच इंडिविजुअल हेडिंग। अब आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग के लिए सारी हेडिंग्स को रीड करो थॉरोली। दिस टाइम आप चूज करो हेडिंग जो क्लोज हो आपकी हेडिंग से, जो आपने बनाई है हेडिंग, आपने जो हेडिंग क्रिएट करी है, और जो आपको क्वेश्चंस में हेडिंग्स दी है, देखो विच इज सिमिलर टू योर्स, राइट? नाउ मेक अ नोट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस दैट मे फिट द पैराग्राफ एंड चेक करो। सो आपने पैराग्राफ को रीड करा, अंडरस्टैंड करा, मेन आइडिया क्रिएट करा, एक हेडिंग दी आपने पैराग्राफ को, आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को चेक करा, कौन सी क्लोज हेडिंग है आपके पैराग्राफ से और आपसे रिलेटेड जो आपने क्रिएट करी थी, मैच दैट। देन नेक्स्ट स्टेप, अगेन रीड द पैराग्राफ बी। फिर ऐसे आप मल्टीपल हेडिंग्स को चेक करो एंड देन मैच द हेडिंग। देन स्टार्ट द पैराग्राफ सी। सो दिस इज कॉल्ड पैरा बाय पैरा। आप कौन सी टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, स्ट्रैटेजी नंबर 2 अप्लाई कर रहे हो, विच इज पैरा बाय पैरा। आप पैराग्राफ को रीड कर रहे हो, देन आप हेडिंग्स को चेक कर रहे हो, फिर आप पैराग्राफ को रीड कर रहे हो एंड देन आप हेडिंग्स को चेक कर रहे हो। सो यू आर रीडिंग ईच इंडिविजुअल हेडिंग्स नाउ। यस, एम आई क्लियर एवरीवन? यस प्लीज। यस, Yes, बता। ma'am. Yes, ma'am. Now, what are the advanced techniques and tips? You have to read the headings and skim a paragraph quickly. Now, make a decision quickly. Right? आपको headings को read करना है quickly, skim करना है paragraph को quickly and decision quickly. This is a reading ability exam. यहाँ पे आपकी reading skills evaluate होती है. So you should have a speed of reading. Expand the heading into a sentence. अब आपने heading को expand करा है sentence में, आप एक sentence भी create कर सकते हो एक heading, जिससे आपका meaning जो है clear हो। Once you the general theme, focus on the paragraph, stop skimming और उसे match करो quickly. जब आपने match करा headings को, read them in order, right? And see कि क्या sequence बनता है। When you check, avoid looking at the detail. आपको detail नहीं check करनी, आपको main idea check करना है, right? Predict a possible sequence of headings before you look. If a paragraph is difficult, आपको difficult लगता है, तो various skimming techniques को apply करो. That means reading in detail भी कर सकते हो आप, right? Skim each paragraph in turn. Decide very quickly what the text is about. Own headings create करो couple of words में and then look at the headings and match also, right?
Now let's do one exercise. I'm giving you some time. This is section A. This is section A. You have to choose heading from the list of options. Underneath, this is a reading section going on. It's for both academic as well as general candidates. It's matching heading, and matching heading comes for both general as well as academic. Yes, everyone ready? Yes. Okay, so this is section A, that means para A. You have to read the paragraph quickly and try to find out the heading for this paragraph. Read the first and last sentence in a very detailed manner, plus read the middle also with the skimming technique. Okay? Okay, read along with me. The role of governments in environmental management is difficult but inescapable. Yes. You have to be quick in reading the sentence also. Okay, who have? Can't hear you. Yes, you can hear me now. So please check what the first sentence says. The role of government in environmental management is difficult but inescapable. So they are talking about some roles of government, right? And moreover, the roles of government in environmental management, right? What does the first sentence says? Yes, everyone. What does the first sentence says? The role of governments in environmental management is difficult but inescapable. Sometimes the state tries to manage the resources on its own and does so badly. तो रोल बताया जा रहा है गवर्नमेंट का, राइट? और किस में? एनवायरमेंट की मैनेजमेंट में, कि समटाइम स्टेट ट्राई तो करती है मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज ऑन इट्स ओन, बट बहुत बैडली करती है. Then read more. However, government act in an even more harmful way. तो गवर्नमेंट और हार्मफुल वे में एक्ट करती है. दे एक्चुअली सब्सिडाइज द एक्सप्लॉयटेशन एंड कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. A whole range of policies from farm price support to protection or coal mining do environmental damage and often make no economic sense. Scrapping them offers a twofold bonus: a cleaner environment and a more efficient economy. Growth and environmentalism can actually go hand in hand if politicians have the courage to confront the vested interest that subsidies create. So what do you think? First paragraph में क्या convey हो रहा है? What the first paragraph is talking about? Yes, please. Yes, everyone, I want your answers, please. With the very first statement में ही clearly given है. Yes, fifth one, right?
सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट में क्लियरली गिवन है कि क्या बताया जा रहा है हमें, रोल ऑफ गवर्नमेंट, राइट? और किस से रिलेटेड है ये रोल? इट्स अबाउट एनवायरमेंटल management. So that means fifth is the correct answer for this paragraph. Yes, everyone clear? Yes, ma'am. Okay, now Yes, let's ma'am. second one. Read the B paragraph. Yes, everyone done? Done with the reading part? Done. Okay, no activities affect more of the Earth's surface than farming. It shapes a third of the planet's land area, not accounting Antarctica. And the proportion is rising. World food output per head has risen by 4% instead the 1970s and 1980s, mainly as a result of increase in the yields from land already in cultivation. But because more land has been brought under the plow, higher yield have been achieved by increased irrigation, better crop breeding, and doubling in the uses of pesticides and chemical fertilizers in 1970s and 1980s. So what do you think? Let's check the headings part. Which heading suits? So what do you think what this paragraph talks about? Yes, everyone? Ma'am, please show the heading. Can you see now? Yes. Yes. Seventh one is the correct answer because it talks about farming and food output. Very first sentence में देखो क्या बताया हुआ है कि no activity affects more of the earth's surface than the farming, right? So it talks about farming and it talks about the food output also, right? Yes, everyone clear? Yes, everyone clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, read the section C, paragraph C.
Now, all these activities may have a damaging environmental impacts. For example, land clearing for agriculture is the largest single cause for deforestation. Chemical fertilizers, pesticides may contaminate water supplies, and more intensive farming and the abandonment of fallow periods tend to exaggerate soil erosion and spread of monoculture, and the use of high yielding variety of crops have been accompanied by the disappearance of old variety of food plants, which might have provided some insurance against pests or diseases in future. Soil erosion threatened the productivity of land in both rich and poor countries. US, where the most careful measurements have been done, discovered in 1982 about one-fifth of its farmland was losing topsoil at a rate likely to diminish the soil's productivity. The country subsequently embarked upon a program to convert 11% of its cropland to meadow or forest. Topsoil in India and China is vanishing much faster than in America. So, what do you think? Let's check the headings. Which heading suits this paragraph? Yes, what do you think, everyone? What do you think? Ma'am, please show me headings. Yes, I'm showing you. Can you see now headings? Yes. No, third is not the correct answer. It's not talking about only farming and soil erosion. Please check. What is the first sentence of the paragraph? All these activities may have a damaging environmental impact. All these activities. So they are talking about activities which have environmental impact. And these are the activities. They're giving you examples of these activities. So it is talking about farming. They're talking about environmental impact. That means the environmental impact of modern farming. कि इसका क्या impact हो रहा है modern farming का. Second one is the correct answer. Yes, Deepika, your answer is correct. Okay, let's move further. Clear, everyone? Yes, ma'am. Okay. Now let's start with matching information questions. What are matching information questions? So this type of question, they ask you to match the statements to the paragraph. अब यहाँ पे आपको headings को match नहीं करना, statements को match करना है to their respective paragraphs से. So for we will look at some of the example also. वो statements आपकी reasons भी हो सकते हैं, descriptions भी हो सकते हैं, summaries भी हो सकते हैं, definitions भी हो सकते हैं, कोई fact भी हो सकते हैं. But you should not be worried about it कि वो क्या है, right? You are not expected to have a specialist knowledge in the reading test. ये आपकी reading skills पे based है, तो आपको read करना आना चाहिए, and then you have to find out also कि वो कौन से paragraph से belong करती है, right? You do not need to understand the whole paragraph. यहाँ पे आपको main idea या whole paragraph को समझने की need नहीं है. आपको एक information दी है, आपको just वो find out करनी है. Just find that specific information और उसको आप क्या करोगे, match करोगे, right? Now, what are the reading skills required for matching information questions? You will first have to able to skim the reading test so that you can understand the paragraph. आपको स्कैन भी करना है स्पेसिफिक वर्ड्स को विद इन द पैराग्राफ, बिकॉज हो सकता है कीवर्ड्स के थ्रू आपको क्विकली मिल जाए. Look for synonyms also and different words with the same meaning, right? Which is called as synonym. Paraphrasing आप चेक करोगे, keywords को चेक करोगे, question statement को भी and then text को भी. जब आपको find हो जाए words और phrases, you think
then you can correct your answer ki yes, this is my answer. But you have to read very carefully in order to fully understand the meaning so that you can decide your correct answer. So speed reading habit is the must for your reading examination. Now, what common problems faced by students in the matching information is that you need to look at the whole text. Answers could be anywhere. ये कहीं पे भी हो सकते हैं. It can be in any paragraph और ये order में नहीं होते. So this problem is कि आपको whole text को read करना पड़ता है quickly. Answers might not be the main idea. Maybe main idea नहीं होते. Normally contain one main idea, but reading the first and last sentence can help you understand this. In questions को read करो and any part of the paragraph. You cannot therefore just quickly skim to find it. There are also irrelevant informations भी होती हैं जिसको आपको consider नहीं करना, right? आपको ignore करना है irrelevant ideas को. Not all paragraph contains an answer. कुछ paragraphs में answer होंगे, कुछ में नहीं, right? Now some of the tips and strategies. What are the tips and strategies? Very first tip is do this question last. अगर आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट करते हो, you will become familiar with the passage and this will help you to identify the correct information. आप जल्दी से information को find out कर लोगे more quickly and easily. Try to find name, places, names and number question में because वो easily आपको मिल जाते हैं. Be aware that there may be synonyms. Synonyms पे आपको focus करना है. For example, अगर आपको 34% दिया हुआ है question में, तो इसका मतलब है कि वहां पे synonym आपको कुछ और दिया हो. It can be like just over a third or about a third in the text. So आपको synonyms पे focus करना है. ये नहीं कि आप 34% को ही search करोगे paragraph में, right? Now, let's talk about strategy. देखो एवरी पर्सन हैज देयर ओन स्ट्रैटेजी बिकॉज सबकी अपनी एक रीडिंग स्किल होती है एंड रीडिंग हैबिट होती है. सो एज पर योर कैलिबर आप अप्लाई करो अपनी रीडिंग स्ट्रैटेजीज को जो आपको लगता है कि यू आर कंफर्टेबल विद. अगर आपको लगता है दैट यू आर एबल टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन आप पैसेज को रीड करोगे एंड इफ यू थिंक नहीं कि मैं क्वेश्चंस को पहले रीड करूं एंड देन मैं अपने पैसेज को पहले रीड करूं एंड देन क्वेश्चंस को रीड करूं, सो इट इज अप टू यू. But you should not waste your time. So read the questions carefully. Think about synonyms कि क्या synonyms हो सकते हैं, कैसे आप इसको paraphrase करोगे और क्या statement आपको passage में मिल सकती है. Each statement in own words. आप try to speak the statement. That means try to paraphrase the statement. Skim करो reading text को carefully so that you can get an idea. रीड करो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को, अगेन प्रिडिक्ट करो आंसर को, स्कैन करो टेक्स्ट पैराग्राफ को, चेक बैक करो क्वेश्चन स्टेटमेंट को कि ये वही स्टेटमेंट है या नहीं, राइट? तब आपने आंसर को क्या करना है, आपने मार्क डाउन करना है. नाउ लेट्स डू दिस. प्लीज क्विकली हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन नाउ. क्वेश्चंस एंड इंफॉर्मेशन टू मैच. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 says solar cell. Now do not make your own assumptions यार. आपको assumptions नहीं लगानी. अगर आपको passage से related कुछ भी knowledge है, आप assumption नहीं लगाओगे. You should based on your text. आपको text के base पे ही अपना answer देना है. Okay? So please quickly do this. You have to match question 1 to 3 with the information. आप passage को read करोगे and then you have to match this. And see, these are the questions जिसको आप जल्दी से find out भी कर सकते हो. How? Look for your keywords. Solar cell. Now try to skim the paragraph with the solar cell. One is here, second is here. Solar cell. Now try to see the informations. Informations are bone strength, used in cars and computer, cures depression. So solar cell, you can see, collects the power of sun and stores it.
right? Then this power can be used to run anything that uses electricity, cars, computers, or home. So that means we got our first answer. First question ka answer is second one. It is used in cars and computers. Correct? Very good, Deepika. You have done. Second one, vitamin D. Now, please search for vitamin D. Skim the paragraph. I can see vitamin D here. And one vitamin D is here. So, what is vitamin D? Vitamin D. Now, this is already used. So, I will look for these two, bone strength and cure depression. And the sun helps our body produce vitamin D. People need vitamin D to have strong bones, right? So here they are talking about strong bones. So vitamin D is related to bone strength. So this is answer number 1. Next is sunlight. Sun is here. Sun can improve our mental health. In places where the sun does not shine, people can suffer from seasonal affective disorder. This is the kind of depression. So agar sunlight है तो you can cure the depression, right? अगर sunlight नहीं होती, then people will have a kind of a depression, right? So this is third one. This answer is third. Clear, everyone? Yes, please. Yes, Yes, ma'am. ma'am. You can even check your answers. I hope now you're clear with matching heading and matching information questions. Yes, everyone? Clear with this part? Any doubts in now matching information and matching heading questions?